Check. A very good morning to all our esteemed guests, chief guests, and our dignitaries on the floor. May I request Srinivasan sir to please escort our esteemed chief guest on the dais, please. May I request? May we request everyone to rise for the national anthem. May we request everyone to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Good morning, esteemed ladies and gentlemen. I, Alia Mehta, along with my friend Manasvi Malvya, the students of Alcorn International School, feel privileged to host this prestigious event. We welcome you to the 14th edition of the Sansad Ratna Awards function, a solemn occasion to honor the outstanding Indian parliamentarians. I now invite Srimati Priyadarshini Rahul, Chairman, Sansad Ratna Awards Committee, to deliver the welcome address. A very good morning to all our MPs, esteemed guests, and media friends present here. I welcome our respected chief guest, Sri Hansraj Ahirji, Honorable Chairman, National Commission for Backward Classes, Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Governor Telangana and Honorable Lieutenant Governor Puducherry, Sri Ajay Kumar Mishra ji, Honorable MOS Home, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Law and Parliamentary Affairs, who will be reaching us in a bit of time, Justice Sri Sanjay Kishan Kaul, former Judge, Supreme Court of India, to the 14th edition of Sansad Ratna Awards 2024. It just looks like yesterday that we started this unique concept of recognizing best performing parliamentarians on the suggestion of Dr. Kalam. This dream concept of Dr. Kalam was got to reality by the relentless efforts of Prime Point Srinivasan sir. And now we look back, its responsibility and highest caution with utmost neutrality.
Today we are overwhelmed with pride and gratitude to see 3 of our award winners have occupied the highest offices and have consented to be the chief guests to the same function they had been once in, Sri Ahirji, Sri Megwalji and Sri Ajay Mishraji. This is a testimony to the quality of awards that could identify national leaders much before their national stature. This uniqueness of Sansad Ratna Awards is our selection process in identifying the best performing parliamentarians, which is data-driven and transparent. PRS India is our knowledge partner for data. We have been applauded by the best brains, political experts, and eminent MPs themselves that our selection process is competent and one of the best way in analyzing MPs' performances. We are fortunate to have a jury committee for the 17th Lok Sabha representing both civil society and the political expertise. The jury committee is headed by Sri Megwalji, Honorable MOS Law, and co-chaired by Sri T.S. Krishnamurthy, former Chief Election Commissioner of India. We put consistent efforts in upgrading the process year after year and expanding its analysis from Lok Sabha to Rajya Sabha and to parliamentary committees under the able guidance of our mentors. This year, we have also introduced Sansad Maharatna to parliamentary committees and a new category called Sansad Utkrisht Maharatna for the outstanding performance of MPs who topped both in the 16th and the 17th Lok Sabha. All of this could not be possible without a working team in place with conviction and commitment towards nation building, with impeccable trust in the system and unshakable belief in an optimistic future. Sansad Ratna team holds professionals from various walks of life, volunteered to break the misconception the general public unfortunately holds for politics. In this process, that is not too easy, the team shows highest grit to storms and fullest dedication to the vision in keeping the sanctity of these esteemed awards. As Dr. Kalam says, give your best to the world and the world will give you back the best. Here, today, we have proudly presented the Sansad Ratna Award winners of 2024, expecting much more of such performers be seen in years to come. I once again wholeheartedly welcome each one of you to this esteemed Sansad Ratna Awards function that celebrates progressive political performances every year. Jai Hind. Thank you, Priyadarshini Rahul ma'am. May I now invite Shri Prime Point Srinivasan ji, founder and chairman, Prime Point Foundation, and founder, Sansad Ratna Awards, to deliver introductory remarks. Good morning, Jai Hind. I am extremely delighted to invite you all for the 14th edition of Sansad Ratna Awards. In these 15 years, we are running the 14th edition. 1 year because of the COVID, we could not do that. We have an eminent chief guest. Mr. Hansraj Ahir is the first Sansad Ratna awardee in 2010, and he received 5 Sansad Ratnas and 1 Maharatna award of 15th Lok Sabha. We are greatly honored that such an eminent person, a 4-time MP and a Sansad Maharatna awardee and former minister is chief guest. Now he is in the cabinet rank of a chairperson of NCBC. We are greatly honored. And Arjunra Megwalji, I am expecting any time because of the some of the party meetings are going on. And he is also 4-time Sansad Ratna awardee and 1 Maharatna of 15th Lok Sabha. And now he continues to be the minister because Sansad Ratna always, the immediate next is only the ministership. And we have another eminent Sansad Ratna awardee, Ajay Mishraji, another Sansad Ratna awardee, is also part of our chief guests. And really we are greatly honored and proud to have all the Sansad Ratnas assembled on the stage. Madam Tamilisai Soundararajan, Dr. Tamilisai Soundararajan is very well known to me for a long time and a very, very down to earth and simple person. In fact, without any formalities, I just called her our telephone, mobile, and asked her whether she could join for the Sansad Ratna Award to be held on 17th. She said, within 2 minutes, my ADC will call you. Within 2 minutes, his ADC called and said that 17th madam is free. You can send a formal letters and other things. That's how she is so down to earth. And
We have such eminent personalities before us. Justice S.K. Kaul. I am from Chennai. He was there as the Chief Justice of Madras High Court. And he is still considered as an iron man of Madras High Court. Such a lot of reforms he has done it. And he is very well known for his very notable judgments. Now we have, probably might have seen Sansad Ratna, Maharatna and Utkrisht Ratna. Sansad Ratna is given annually. Sansad Maharatna is given once in 5 years. For 15th Lok Sabha, Hansraj Ahirji, he got it, and Janra Megwal got it. And 16th Lok Sabha, we had 3 eminent personalities. They are all here only. They got a Sansad Maharatna. That is given once in 5 years for the consistent performance. Sansad Utkrishta Maharatna is above like a PhD, because 2 parliaments, if they continuously, consistently perform, they get Utkrishta Maharatna. Today we have 3 eminent parliamentarians, Bhatragiri Madhav, Supriya Suleji and Appa Barneji, 3 parliamentarians having consistently performed in 16th Lok Sabha and 17th Lok Sabha. They are receiving the Utkrishta Maharatna. This is the first time we have introduced, because they are going on performing, because we don't know what to do, because at the same time Mr. T.S. Krishnamurthy, co-chairperson, suggested that we should honor them somehow or other, because they are performing. So that's how we immediately did it. And the credibility, because of the 15 years, we have, our procedure is very tough for selection process. As a jury member also, Mr. Hansraj Ahir knows, and our selection process, we are data driven, and we get the data from PRS India, we get the data from Lok Sabha and Rajya Sabha. Our processing is, there is a screening committee headed by Mr. Nurullah. He is here. He is a very senior journalist, and the eminent professors are there. First level screening, second level screening, then it goes to the jury committee for approval. That is, churning, like churning, we are doing it. And the credibility is highest. Even our Dr. Abdul Kalam, in the last book, Manifesto for a Change, he devoted one full chapter on the Sansad Ratna. He interviewed both Mr. Hansraj Ahir and Arjunra Megwal ji. At the time they were Sansad Maharatnas of 15th Lok Sabha. He interviewed them and published them, if Hansraj ji remembers that. And such a wonderful, every year he used to give me the guidance on that. Second is, in the UPSC examination for the past 4 years, Sansad Ratna Award is one of the suggested questions by all the question banks. In fact, this time also, last week, I saw who are all the recipients of Sansad Utkrishta Maharatna. That's a new word has been coming up, and it is UPSC aspirants are studying now. And last year, Honorable Prime Minister Modi ji has tweeted in his personal tweet about the Sansad Ratna greeting. And today evening, I am another happy information that Honorable President Draupadi Murmu ji has invited all the Sansad Ratna awardees to Rashtrapati Bhavan at 4 p.m. for a photo session. Today, all the Sansad Ratna are getting this citation, and they will also be having a photo session with the Honorable President. And this is a very unique thing is, this Sansad Ratna is managed by a young team headed by Priya. And so we have consciously, Abdul Kalam wanted the youngsters and women should get empowered. So we are trying to follow elders. We are giving a mentoring, and youngsters, they are doing executing things. So we are bringing the wisdom of the seniors as well as the energy and enthusiasm of the youngsters. This is one of the great models that we are trying to implement successfully. We are running it. And one particular suggestion that every year I want to, before conclusion, one suggestion I always make. One is, this time I wanted that academically the universities, they don't research on the parliament functions or the parliament performance and that thing. They simply go on the politics and other thing. The politics paper is there. We tried for, I asked Priyadarshini to do a PhD on the parliament. We have such a ample data from 14th Lok Sabha, 14, 15, 16, 17. We have enough data, and we are not able to do a research. There is no sufficient professors also not available. Some of them she has registered with the university, but they don't have proper professors with it. Then we are trying to help or co-guiding. So there are a lot of parliamentarians are here, and
You should also, even Honorable Chief Minister's family of Maharashtra's Chief Minister's family also is here. We are very grateful to you all, and you must take it up, at least in one state where Maharashtra state, they can advise the academician to experimentally to do a research on PhD. For that, our another sister organization, Next Gen Political Leaders, is another organization, and that we will give all the helping, and we wanted to create more number of future leaders. Today we are very happy. Out of 15 Sansad Ratna awardees, 5 awardees are from Maharashtra, and 5 are youngsters. Really, it is a great advantage, and it has developed a lot of competitive spirit. In fact, with that note, I welcome, and once again I greet all the Sansad Ratna, Sansad Maharatna, Sansad Utkrishta Maharatna awardees. They are all role models for the nation, and they should, the youngsters should emulate their performance. And with this, I welcome them, and I also give an introduction of this particular background. If any help is needed, anybody can approach us for any support on academically for doing research. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. Thank you, Prime Point Srinivasan sir. On behalf of the Sansad Ratna Awards Committee, we will now honor the dignitaries on the dais. May I invite Shri Deepak Kapoor, Assistant General Manager, Canara Bank, to honor Shri Hansraj Ahirji, Honorable Chairman, National Commission for Backward Classes. He is also the patron of the Sansad Ratna Awards Committee. May I invite Shri Vikas Arya, Secretary Arya Samaj Educational Society, DAV Schools, Chennai, to honor Madam Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry. May I now invite Mr. Rajiv Bagga, India Head, DBS Bank, to honor Shri Arjun Ram Meghwalji, Honorable MOS for Law and Parliamentary Affairs and Chairman of Sansad Ratna Awards Jury Committee. May I now invite Partha Reddy ji to honor Shri Ajay Mishra ji, Honorable MOS, Home Affairs. May I now invite Partha Reddy ji to honor Shri Ajay Mishra ji, Honorable. May I now invite C. Hemalata ji to honor Honorable Justice Shri Sanjay Kishan Kaul ji, former Judge, Supreme Court of India. Thank you all. I now request Srimati Suparna Gangalji, Additional Secretary, Prime Point Foundation, to read the greeting messages received from dignitaries. Excerpts from the greeting message of Shri C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Jharkhand. Since its inception in 2010, the Sansad Ratna Awards have served as a beacon of recognition for exceptional contributions to our parliamentary system. Inspired by former President of India and great scientist Dr. APJ Abdul Kalam, who inaugurated the prestigious ceremony in May 2010, the awards continue to uphold their mission of celebrating the dedication and achievement of our top performing leaders,
while inspiring others to strive for excellence. Excerpts from the greeting message of Dr. M. Virappa Moili, former Chief Minister of Karnataka and Union Minister. I am also happy to note that 3 standing committees are honored with the Sansad Maharatna Awards for their consistent performance. I am confident that this initiative will strengthen the roots of democracy. Excerpts from the greeting message of Shri T.S. Krishnamurthy, former Chief Election Commissioner of India and co-chairman of the Jury Committee, Sansad Ratna Awards. Needless to stress, the survival of any democracy depends upon active participation of representatives elected through free and fair elections. I have no doubt that the Sansad Ratna Awards will continue to motivate our parliamentarians to render public service for the improvement of the quality of Indian democracy. Thank you. May I invite Srinivasan Sir to honor Shri Hansraj Ahirji, Honorable Chairman, National Commission for Backward Classes. He is also the patron of the Sansad Ratna Awards Committee. Thank you. At every Sansad Ratna event, we release our publications free of cost as ebooks for the benefit of the younger generation and the general public. This year, we are releasing 2 ebooks titled Compilation of Editorials published in the magazine Presence during the years 2020 to 2023 and compilation of cover stories published in 2023. We are also proudly releasing a book titled Handbook for Young Indian Political Aspirants, authored by Ms. Priyadarshini Rahul. I now request the dignitaries on the stage to release the book. Thank you. May I now request Honorable Justice Shri Sanjay Kishan Kaulji, former Judge, Supreme Court of India, to deliver his keynote address. Honorable Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor and Governor, eminent people on the dais, members of Parliament, ladies and gentlemen, Namaskar. It's a privilege to be delivering the keynote address at the 14th edition of the Sansad Ratna Awards. Unusually, as a judge, I find myself surrounded by the political system today. A short while ago, Mr. Srinivasan shared the history of the award. I was pleased to hear that it is the only award instituted by civil society to recognize and commemorate parliamentarians who have dedicated their lives to serving our people. After all, the Parliament is the hall of democracy, and that's what takes root from there. What makes the award unique is that the awardees are selected on the basis of an objective performance across party lines and data provided by credible bodies such as PRS and the Lok Sabha Secretariat. The awardees today are all distinguished leaders from across the country who have regard for their sincerity and sense of duty, and above all, a shared vision to India's progress. I extend my heartiest congratulations to each of them and to the organizers. I do not intend to discuss the role of parliamentarians, as that would be preaching to the choir for this. I look to each one of you to lead by example. However, having recently demitted office as a judge of the Supreme Court, I do think the relationship between the legislature and the judiciary is worth thinking about, both as an end and as a means to an end, to strengthen the functioning of India's democratic institutions and achieve the values set in our constitution.
Traditionally, the judiciary is seen as a check on the legislature. So much so that a running theme of Indian politics is the friction between the legislature and the judiciary. Aladi Krishna Swami Iyer, a prominent member of the Constituent Assembly, explained that judiciary should not function as a super legislature, since it depends as much on the cooperation between the other pillars. Viewed in this way, the judiciary does not tread into the legislative domain, but reviews the legislative action on the anvil of constitutional values. We are all familiar with the landmark judgment of the Supreme Court in Keshwanand Bharati's case. In this case, the court recognized the power of the Parliament to amend the Part 3 of the Constitution, but carved out the basic structure doctrine, imposing a check that amending power would not extend to the basic feature of the Constitution. Although there have been some instances where courts have assumed the more expansive power, such as the PILs, the judiciary has largely been mindful of the institutional limitations. The understanding, however, is limited in several ways. For example, in view of the relationship between the legislature and the judiciary as unidirectional as opposed to the reciprocal, we are as much a parliamentary democracy as a constitutional democracy. Therefore, it is imperative for the legislature and the judiciary to facilitate inter-institutional cooperation. This can be done through inter-institutional dialogue. Two examples on the way which can be achieved comes to my mind. First, the courts go through the jurisprudence that recognizes the legislature policy discretion. We saw the most fitting example of this recently in the opinion penned down by Chief Justice Chandrachud and myself in Supriyo versus Union of India, recognizing the right of the same-sex person to enter into civil union. While we recognize that there were institutional limitations in striking down or reading in the words of the Special Marriage Act 1954, we set out clear obligations of the state to recognize the same-sex unions and grant benefit under the law. I am conscious, of course, of the fact that this is the minority opinion. The opinions also lay down guidelines to ensure meaningful recognition to the rights of the union. Significantly, the opinions record the submission of the Solicitor General to constitute a committee to elucidate the scope of the entitlement of the queer couple in the union, and with that, some contours for the committee to consider. According to me, this was a means for the judiciary to enhance the systematic effectiveness of the legislature without merely invalidating statutory provisions as unconstitutional. The latter is not often easy, as it can create serious gaps in legal protection, and certainly fashioning remedies in this manner facilitates institutional dialogue and leaves the legislature with sufficient discretion and even has the potential to influence legislative outcomes. They identify gaps for other institutions to fill. At the very least, decisions such as these can serve as an important source for parliamentary debates and a powerful tool in the hands of the opposition. That brings me to the second example of the interinstitutional dialogue. Parliamentary debates. Debates can be relied upon by courts not only to interpret the law, but also to test the law. This is in addition to their role in democratic politics. For example, the courts are regularly required to interpret statutes in line with its object, which can be gathered not only from the statement of objects and reasons, but also from debates. Justice Lokur put it in perspective when he says, a reference may be made to the Constituent Assembly debates or to parliamentary debates, as indeed to any other relevant material, to understand the context in which the constitutional or statutory provisions were framed, and to gather the intent of the lawmakers, but only if there is some ambiguity or uncertainty or incongruity or obscuring in the language of the provision. Similarly, one of the tests to ascertain whether a legislation makes a reasonable classification under Article 14 of the Constitution is that it should have a reasonable nexus to the object sought to be achieved by the statute. The objective can be gathered from the parliamentary debates.
Of course, the objectives must be legitimate. Courts cannot uphold an illegitimate objective. At the same time, debates that reflect the balancing efforts by the legislators of cost benefits assist courts in the assessment of whether the legislation strikes an adequate balance, that is, whether the benefit to the public outweigh any harm that it may cause. As the former Chief Justice of the Supreme Court of Israel, Aaron Barak, puts it, the zone of proportionality is the legislature's kingdom. Keeping the boundaries intact is the judge's kingdom. With courts insisting that all laws measure up to proportionality, legislators too are incentivized to internalize the values that animate the standards of proportionality. Where there are several other ways in which judiciary and the legislature can cooperate with each other, it is important of constructive dialogue that I want to leave you with today. I have had personally the opportunity to discuss with the parliamentary subcommittees dealing with law and other affairs. And I thought those dialogues, whether it occurred in Chennai when they came or in the Supreme Court when I headed the National Legal Service Authority, helped in understanding the perspective of the legislature and also for them to understand what our concerns are. That is why today on the technology issue, the government has been sanctioning the full funds which was required to take the whole working of the court system into a different domain, with technology playing an important role. If this is kept in mind, that we are conscious of it, it will ensure a greater accountability and enhance democratic process. I am sure that the awardees will be conscious of this and they charter the course of India in future. Let me end by saying that one of my former Chief Justices told me once, and I believe that's true, there is always a little underlying friction which arises from the role we provide. The legislature always believes that they have the domain to legislate and they are the elected representatives of the people, all of you are. But the check and balance is then provided in the constitutional scheme, which provides for an administration, a legislature and the court. And since especially we have a democracy which is first past the poll concept, where most governments would be having almost less than 50% votes, the court plays an important role in keeping a check and balance on the system. So he would say that a little bit of underlying tension is good. If things are very hunky-dory between the judiciary and the executive, then we have a problem. And that, I think, reflects the role of each of us in doing so. My congratulations again for the persons who have been awarded for their achievements. Parliament needs to debate, and I think that's the most important function. I hope that the awardees inspire more of our spirited youth to become parliamentarians. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful and thought-provoking speech. May I now invite Shri Ajay Kumar Mishra ji, Honorable MOS, Home Affairs, to deliver the felicitation address. प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा संसद रत्न, संसद महारत्न और संसद उत्कृष्ट रत्न ऐसे अवार्ड के इस फंक्शन में मंच पर उपस्थित तेलंगाना राज्य की महामहिम राज्यपाल, पुदुचेरी की एलजी श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन जी, नेशनल बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन और जिन्होंने कई बार संसद रत्न से अवार्ड को प्राप्त भी किया, सम्मानित भी हुए, ऐसे बहुत ही उत्कृष्ट सांसद भी रहे, केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे, ऐसे श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट श्री संजय किशन कौल जी। मेरी जिनसे पहली मुलाकात के बाद फिर प्रियदर्शनी से मुलाकात हुई और उनके अंदर मैंने एक जज्बा देखा कि इस देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं
उनको प्रेरित करने का और इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में उनकी वाकई में इतनी उत्कंठ इच्छा थी, उसको देख करके मैं भी बहुत प्रेरित हुआ। ऐसे हमारे प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के संरक्षक कहूँगा मैं, ऐसे आदरणीय श्री श्रीनिवासन जी, और उन्होंने अपना जो चेयरमैन अपने बाद चुना जिसको अध्यक्ष चुना, वास्तव में उनका निर्णय बहुत ही अच्छा था। प्रियदर्शिनी राहुल से मैं कई बार मिला हूँ, उनके अंदर लगातार काम करने की जो अथक क्षमता है, योग्यता है, ऐसी सम्मानित अध्यक्ष। यहाँ पर मेरे बहुत सारे सम्मानित सांसदगण मौजूद हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी हमारे मुख्य विपक्षी दल के लोकसभा में हमारे नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। इनको आज सम्मानित किया जाना है, लेकिन आप थोड़ा भी टेंशन में थे, खुश रहिए। भाभी जी बगल में बैठी है ना, मैं भाभी जी से मिला था, बहुत उनका, हम लोगों को एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं मेंबर था, तो उस दौरान आपके साथ में जाने को अवसर मिला। एक बहन की तरह, एक संरक्षक की तरह उन्होंने पूरी टीम को जिस तरह से उस लंबे दौरे में संभाला था, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर सुप्रिया सूले जी हैं, भरथरी मेहताब साहब हैं, सुधीर गुप्ता जी हैं, हमारे M.K. प्रेमचंदन, बहुत सारे हमारे सभी साथी हैं, वाराणसी साहब, सभी लोगों को मैं जानता हूँ और सब ने अपने अपने कामों से वास्तव में पार्लियामेंट में बहुत अच्छा योगदान किया है। मैं इस अवसर पर जब आज उनको सम्मानित किया जाना है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह से वो देश और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करते रहें, उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्राइम पॉइंट फाउंडेशंस का, जिन्होंने, जैसी मेरी जानकारी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब से प्रेरित होकर के इस सम्मान को प्रारंभ किया था। मुझे भी एक बार मौका मिला है, मुझे भी संसद रत्न का अवार्ड शायद 2019 में मिला था, 2021 में, 2021 में। तो इस दृष्टि से मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा, उनके बारे में जानकारियां हुई। बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ वो राष्ट्र की सेवा करने का काम कर रहे हैं। मैं फाउंडेशन के प्रेरणता श्री श्रीनिवासन जी, प्रियदर्शिनी राहुल और उनकी टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे जब इस अवार्ड से सम्मानित होने का अवसर मिला तो मैंने प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के विषय में जानकारियां भी इकट्ठा की। वाकई में उनका जो उद्देश्य था, जैसे हम जानते हैं हमारा देश संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश है और अलग अलग विचारों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फिलॉसफी लेकर के हम सब सदन में आते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक होता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र के हित में और देश के लोगों के हित में हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमारे सभी सांसदगण प्रयास करते हैं और उसके परिणाम भी आते हैं। हम सब ने देखा, जैसे भी जस्टिस कौल साहब कह रहे थे कि हमारा लोकतंत्र प्रमुख रूप से जिन व्यवस्थाओं पे है, जिनका हस्तक्षेप रहता है, उसमें जुडिशरी की भी बड़ी भूमिका होती है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में पहले आम चुनाव के पहले ही टकराहट भी होती है, व्यवस्थाएं होती हैं तो टकराव भी होता है। देश में आम चुनाव से पहले ही संविधान में पहला संशोधन आया था। वो भी एक संयोग है कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ ही आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव से पहले 1951 में 18 जून 1951 को वो संविधान संशोधन
देश की पार्लियामेंट में लेके आए थे, उसको पास कराया था। तो ये सामान्य सी बातें हैं। कहीं पे पार्लियामेंट इस तरह के निर्णय लेती है, जुडिशरी के कई निर्णय होते हैं जिनको हम लोग सम्मान भी करते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि उनको परिवर्तन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। आम तौर पर जब ये देश का संविधान बना था तो पूरी दुनिया में भारत के संविधान को एक अलग तरह से लिया गया था। भारत के संविधान के विषय में उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों के बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा कि ये संविधान इतना लचीला, इतना विस्तार से सभी समस्याओं को समेटे हुए और राष्ट्र के सभी लोगों को किस तरह से उनके साथ न्याय हो सके, वो सारा कुछ इस संविधान में है। लेकिन फिर भी एक प्राविधान ये भी था कि जहां कहीं आवश्यकता हो और देश हित और देश के लोगों के हित में जब जरूरी होता है तो संविधान का संशोधन करने का भी प्राविधान किया गया था। उस दृष्टि से संक्षेप में मैं कहूं तो हमारे 10 वर्ष की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल 8 संविधान संशोधन किए और वो 8 संविधान संशोधन आप सब जानते होंगे किन किन विषयों के लिए किए हैं। बहुत ही ऐसे विषय थे जिनको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता थी और लगभग पूरे सदन ने हर संविधान संशोधन में अपनी सहमति दी। इसी तरह से उन्होंने संविधान के 4थे अध्याय के अनुच्छेद 36 से 51 तक उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, किसी भी गवर्नमेंट पर वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और दुनिया के साथ हमारे देश के कैसे संबंध हो, वो इस अध्याय में वर्णन है। उसका प्रयोग भी हमारी सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, नीतियों और नियमों का पालन करने में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है। लेकिन ये सारी बातें जब पार्लियामेंट से निकल करके आती हैं तो उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सांसदों की होती है। ऐसे बाहर से देख करके केवल इतना लगता है कि सांसद की भूमिका केवल पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाना, नियमों के साथ बहस करना, अलग अलग बिल्स पर बहस करना, अपने विचारों को रखना, ये एक विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम पार्लियामेंट्री कमेटी में होते हैं तो उसमें किसी दल का सदस्य ना हो कि उस कमेटी के सदस्य के रूप में जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों को लेने में भी हमारे सांसदों की बड़ी भूमिका होती है। वो भी मेरे ख्याल में ये जो सम्मान दिया जा रहा है उसमें कमेटी में भी आपका रोल क्या होता है, संसदीय जो समितियां होती हैं वो भी शायद एक मेरे ख्याल में पॉइंट है। तो इस दृष्टि से और उसके बाद खासकर लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनकी अपने क्षेत्र के प्रति भी बड़ी प्रतिबद्धता होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस दृष्टि से उनकी भूमिका अपने क्षेत्र से लेकर के पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से लेकर के कमेटी के माध्यम से राज्यों और राष्ट्र सबके साथ समन्वय बना करके इस देश के हित में कैसे सकारात्मक काम किए जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे सांसदों की होती है। अगर हम कहेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये मिला करके पार्लियामेंट बनता है और उसमें हमारे सांसदों ने जो आज जिनको सम्मान मिलने जा रहा है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, सुधीर गुप्ता जी हैं, सिन्हा साहब हैं। इन लोगों को जब हम बोलते हुए देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने का अवसर भी हम लोगों को मिलता है। M.K. प्रेमचंदन साहब हैं, भले वो बोलते हैं हमेशा हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मैं सुनने जरूर आता हूँ। ऐसे अधीर रंजन साहब हैं, जब बोलते हैं मेरे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी मैं सुनने का कोई मौका छोड़ता नहीं। इस दृष्टि से अगर देखें तो अलग अलग सांसदों
मेहताब साहब को तो मेरे ख्याल में सदन के आधे से ज़्यादा लोग सुनने के लिए आते ही, तो इस दृष्टि से बड़ी भूमिका आप सबकी है। आप सबका आज सम्मान हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और इसी तरह राष्ट्र के निर्माण में आपका निरंतर योगदान बना रहे। आप स्वस्थ रहें, आप इसी तरह से योगदान करते रहें, इसके लिए मैं बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और खासकर आपके प्राइम पॉइंट फाउंडेशन को मैं अलग से आप श्रीनिवासन जी का, प्रियदर्शिनी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका का निर्वहन करके वो राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं उनको आभार व्यक्त करते हुए आप सबको पुनः बधाई देते हुए बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for those wonderful words of wisdom and commitment to the public. May I now invite Madam Dr. Tamilisai Soundararajan ji, Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, to deliver the speech. A special good morning to each and everyone here. First of all, I congratulate all the awardees and my respects to Sri Hansiraj ji, Sri Ajay Kumar Mishra ji, Sri Justice Sanjay Kishan Kaul ji, Prime Point Srinivasan ji, Priyadarshini Rahul ji, and all the other esteemed dignitaries, parliamentarians, and the awardees who have assembled here, my dear press personnel and security personnel. I was surprised when I was called for this program, because all the dignitaries who have assembled here in the dais are best parliamentarians, and now they are going to award the best parliamentarians. Then what is the role for me here? I am neither a member of Legislative Assembly or member of Parliament, but I have been asked to come here as the most powerful person. Don't think I have come here because I am the governor, I am telling I am the powerful person. I am one among the 125 crores approximately voter. So as a powerful voter I have come here to who is selecting our parliamentarians. And this is the second award to them, because already their constituency people have awarded them to be their leader. And as we are running out of time, I want to stress upon only 2 to 3 things. First of all, I thank the present Parliament and the Honorable Prime Minister and the other leaders for passing the 33% women reservation bill. And I am very proud that it has been assented by a women president. So in spite of so much of struggle, only women women politicians will know the struggle of being a woman, whether it is constitutional post or parliament or a political person. And I am really very happy. And even though I am very happy, when I read about the list of awardees, I think only Madam Supriya Sole is the single woman in that list. Kavi. 2, 3 are there. Hina Kavinji. But in spite of that, number is limited. So my thought is, whatever may be the political situation, the party should give more recognition to the women leaders. Our great Bharati says, Nimirnda Nannadai, Nergonda Parvai, Nilathil Yarukkum Manjada Jnanacharuk. Women will stand straight, look straight, and they will grab the opportunities when it is given to them. But opportunities to be given to them, and I am not telling only because of reservation you have to give them. An opportunity is given to women, definitely they will exemplify. Bharatidasan says, Pili illai, pani illai, en kudumbathil, yenendral, en kudumbam manaviyal arasalvadale. What he says, there is no any debt or disease in my family,
because my wife is ruling the family. Like women are ruling the politics. If they are given representations, they will exemplify in their service to the people. So I am really very happy that I have been called in a situation where the women reservation bill has been passed, and I am thankful to each and every one of us, of you, for that. And another concern is the voting percentage. Definitely, because I am from the South Chennai constituency of Chennai, and it is a constituency where more educated population are there. But in spite of that, the voting percentage was only 50%. That is the most educated constituency, but less percentage of voting. So the people in politics are parliamentarian. Our responsibility is to increase the percentage of voting, particularly motivate them to vote, youngsters to vote, and the holiday given for voting should be utilized by the citizens only for voting. Once I was, during the election time, I saw some of the families in the airport. I told, tomorrow is voting. And you are all going, no, this holiday, no. So we are going for a holiday trip because it's a holiday. And I requested the election commission, don't have the election date on Monday or Friday. Otherwise, they are combining these 2 days and they are traveling, not voting. So everything should be taken care, because only when 50% is not voting, then what is the judgment they have on the voters? So these are the simple things the parliamentarians should concentrate. And our Tirukural says, Vellattanayadu malarneetam, Mandarku ullattanayadu uyarvu. A lotus flows according to the level of the water. Like that, the performance is according to the mindset and the performance of the parliamentarians, and they have risen to this level to receive this award. And when they receive the awards, I am really very happy, as Prime Pant Srinivasan said, this has been endorsed as our Honorable President of India have invited all these awards to Rashtrapati Bhavan, and this is a great endorsement for this organization, and the assignment by you has been endorsed by the highest office of this country. And the parliamentarians also, because each and every year when they are awarded, there will be some motivation. Whatever may be the topmost person, there will be motivation if awards are given. And another appeal I want to bring out here is, motivate not only women, motivate more youngsters to come to politics. Nowadays, politics, they think the youngsters think that it is easy, but it is not easy. In a lighter sense, I always say, one child came, and one small boy went to his father and told, Appa, I want to become a doctor. Then Appa told, no, then you prepare for NEET. I will give you some tuition. Then he told, no, Pa, I will enter politics. Then automatically, I will get some university to be awarded doctorate. So he thinks it's so easy, but it is difficult. But in this difficult field, each and every one have to be there to make the people smile. And parliamentarians, because the whole, even myself view the parliament through televisions only. So the parliamentarians, how they deal, as our Sri Justice told, during the debates, how they are performing themselves, it is viewed by all the people of the country. So you should set an example how you are going to be a role model to the rest of the young politicians in the country. And whatever may be the challenges, and whatever may be the problems you put forth, and whichever may be the constituency you are selected, the final goal is to see the smiles in the face of the people. Whatever may be the office, whether it is governor's office or a panchayat office or parliamentary office or state office, it is the smile which we see on the face of the people is the ultimate goal for which we are all working. As our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji rightly emphasized, that Parliament represents the dreams and voices of 125 crore Indians, so that each and every Indian should be taken care by the parliamentarians. And I am really very happy to be here, and as I said, I am a very small person to
give the awards to the parliamentarians. But whatever may be the challenges given to women, I always say, because when I became the governor of Telangana, some of the critics came forward and told she's the youngest person, how she's going to manage the newborn state. I told I'm a gynecologist. Gynecologists are good in managing the newborn babies. So Telangana is a newborn state, so I will manage. So when I was given an additional charge, okay, she managed Telangana. When I was given an additional charge as Lieutenant Governor of Puducherry, then immediately same critics came forward. Oh, she's youngest governor, how she, okay, she managed Telangana. How she is going to manage Puducherry? Then I told as gynecologist, I can manage if a singleton baby is born. And I can manage if twin babies also born. So twin babies are born. Why I am telling? This confidence is given to me not because I am a politician's daughter. It's an entirely different story. My father was a PCC president and he was a congressman. 25 years back I joined BJP and with my own efforts I became as the president of that party and now I am the governor. Why I am telling the confidence is given to me, I gained this confidence because of my education. So my request is give empowerment to the women, give education to women, give representation to the women. That will empower the country. As our great Swami Vivekananda said, for a country to fly, the women wing and also the men wing should fly equally so that the country can fly high. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. May I now invite Shri Hansraj Ahirji, Chairman, National Commission for Backward Classes, to deliver his address. हमारे देश में जो संस्था एक बहुत बड़ा काम कर रही है, प्राइम पॉइंट, चेन्नई में रहकर आपने देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट हाउस के लिए जो निगरानी रखी है, ऐसी संस्था के द्वारा आयोजित संसद रत्न अवार्ड 2024 के इस आयोजन में उपस्थित जिन्होंने अभी विचार रखे हैं, हमारे तेलंगाना स्टेट की गवर्नर सम्मान्य डॉक्टर श्रीमती तमिलसाई सुंदरराजन जी और मंच पर बैठे हमारे सहयोगी रहे सम्मान्य होम मिनिस्टर एमएस होम श्री अजय कुमार मिश्रा जी, सम्मान्य श्री जस्टिस श्री संजय किशन कौल जी, और जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्षों से प्राइम पॉइंट का काम करते हैं, सम्मान्य हमारे श्रीनिवासन जी, प्रियदर्शनी जी, और सभी यहाँ पर इतने बड़े अवार्डी बैठे हैं। पहले भी अवार्ड जिन्होंने लिया है संसद अवार्ड, और उनके साथ मैंने भी काम किया है लोकसभा में। सभी सम्मान्य आदरणीय भृताहरी मेहताब जी, अधीर रंजन जी, हमारी महाराष्ट्र के बहन सुप्रिया सुले जी, श्रीरंग बारने जी, अमोल कोले जी, श्रीकांत जी, सिंधे, प्रेमचंद्रन जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर मुझे नाम पढ़ रहा था, और भी कुछ नाम है हमारे साथी, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो देश में महाराष्ट्र का भी हमारे सांसदों का अच्छा योगदान है। देश के सभी सांसदों का योगदान यहाँ पर अभी प्राइम पॉइंट ने सिद्ध कर दिया है। प्राइम पॉइंट जो संस्था जो काम करती है, आपने मुझे भी अवार्ड दिया है, मुझे इसीलिए आपने यहाँ बुलाया है। लेकिन पार्लियामेंट ये देश का बहुत बड़ा एक मंदिर है लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के मंदिर में काम करते समय में इसका महत्व हमने तब भी देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने आकर उसके पायरी के दर्शन लिए, जमीन पे छूकर, और तब पार्लियामेंट में उन्होंने कदम रखा। और उन्होंने कहा भी कि पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर है और संविधान ये देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। इन दो बातों को हमने देखा तो पार्लियामेंट में लोकतंत्र की पूजा होती है। लोकतंत्र का महत्व अगर हमने समझा
तो ये पार्लियामेंट उसका सबसे बड़ा एक कार्यक्षेत्र है और देश की 140 करोड़ जनता को न्याय देने वाला सभागृह जो है उसमें काम करने वाले सांसद जिन्हें आप अवार्ड दे रहे हैं, उन सभी सांसदों को मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं आप लोगों का सभी का कि आप सही उतरे हैं, आपने आपके पद की जिम्मेदारी को समझा है। पार्लियामेंट मेंबर एक गरिमामय पद होता है और उसके अपने सम्मान में जो भी लोकसभा में काम किया है ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के प्राइम पॉइंट के लोगों ने किसी स्टेट को महत्व देते हुए काम किया है, किसी व्यक्ति को महत्व देते हुए काम किया है, ये मैं नहीं मानता। कि तो पूरा रिकॉर्ड होता है, साइट पे आता है और सभी को उन्होंने चुनकर उसके पूरा एनालिसिस करते हुए इस अवार्ड का चयन किया है। इसलिए यहाँ पर सभी लोगों को जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया है उन्हीं लोगों को अवार्ड मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे पार्लियामेंट की गरिमाओं को हमने बनाए रखा है। कुछ लोगों की धारणा ये होती है कि पार्लियामेंट में कभी हल्ला होता है, हो हल्ला होता है किसी विषय को लेकर। मैंने भी कई बार लोकसभा में जीतने के बाद में हो हल्ला हमें भी करना पड़ा था, किसी स्कैम को लेके किया है। यहाँ बैठे लोग हैं, हमारे सांसद सदस्य हैं, तो कभी कोल घोटाला निकला तो मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ कि मैं 3 लोकसभा में 3 सेशन में हमने इसका हल्ला किया था। हल्ला करने का अर्थ ही नहीं होता है कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है, एक शस्त्र है, हथियार है, उसकी भी एक मर्यादा होती है और मर्यादा में रह के काम करने के हमें डिबेट में हिस्सा लेना है, क्वेश्चन लगाना है, बिल लगाना है, 377 है, 0 आवर, अनेक हथियार है। इन सारे हथियारों का वेपन का यूज करते हुए जो आदमी काम करते हैं, कितने बार डिबेट में हिस्सा लिया है, कितने क्वेश्चन लगे हैं, कितने बिल लगे हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का चयन क्या है, इन सारी चीज़ों को निगरानी रखने वाली प्राइम पॉइंट, मैं ये कहता हूँ कि प्राइम पॉइंट के बारे में तीसरी आंखें हैं। लोकतंत्र पर नजर रखना, लोकसभा में क्या काम चल रहा है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में क्या काम चल रहा है। अभी तो आप कमेटियों का भी काम देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का। इन सारों पे नजर रखते हुए आपने लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। मैं तो समझता हूँ आपने यहाँ स्पर्धक बना दिए है, पूरे 543 लोकसभा के मेंबर अब ये कंपटीशन कर रहे हैं, राज्यसभा के भी मेंबर। अब देखते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए जो काम सिर्फ सरकार नहीं करनी चाहिए ये भावना न रखते हुए किसी एक एनजीओ ने काम किया है। इसलिए प्राइम पॉइंट श्री की संस्थाएं देश को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और ये मजबूती बहुत जरूरी है क्योंकि तो 140 करोड़ देश की आबादी का देश है। 7 लाख से अधिक है विलेज है, गांव है, अनेक स्टेट है, अनेक भाषा, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। देश की सीमाएं देखें तो 15,000 करोड़ सीमा, उसकी रक्षा से लेते हुए अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी को लेते हुए बॉर्डर की सिक्योरिटी देखते हुए सारे क्वेश्चन लोकसभा में जब आते हैं, बातें होती है तो सरकार पे दबाव आता है। सरकार दिशा में काम करती है, करना पड़ता है कि तो जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है और 20 लाख से अधिक वोट चुन के देते हैं, तो इन सभी सांसदों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने उन 20 लाख वोटों का सम्मान किया है कि आपने पार्लियामेंट में अच्छा काम किया है। ये बहुत गरिमामय पद होता है। मैं अपने आप को देख के नहीं कह रहा हूं, हमने सब काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पार्लियामेंट के मेंबर काम अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो इश्यू रहता है अपने क्षेत्र में होता है, जिले में होता है, उस इश्यू पे जब लोकसभा में बोला जाता है तो वो इश्यू सिर्फ लोकसभा का नहीं होता है। मैंने देखा है कई बार लोग उसको समर्थन भी देते हैं पूरे देश के। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ केरला से लेके तो अपने हमारे जम्मू कश्मीर के भी सांसद भाई बैठे हुए हैं, पूरा देश यहाँ बैठा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि एक इश्यू जब किसी लोकसभा में मिलता है तो वो पूरे देश को लागू होता है और वहाँ अमेंडमेंट होता है। कई बिल आते हैं अमेंडमेंट के लिए आते हैं, कई लोग हिस्सा लेते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। मैंने देखा है एक बात कि जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था, जिसके लिए मैं बहुत लड़ता था, काफ़ी प्रयास करता था,
मैं 9 बार लोकसभा में विषय लगाया था। एक उदाहरण दे रहा मैं आपको। लैंड एक्विजिशन जो है 1894, ये देश के लिए किसानों का शोषण करता था और इशू मेरे यहाँ बहुत बड़ा था। कोल माइंस के लिए लैंड एक्विजिशन होती थी, बहुत छोटा सा इसमें रेट मिलता था और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी उसमें लिए, सफलता मिली। क्यों मिली? कि लोकसभा में जो इशू लगते थे उस पर विचार हुआ और मजबूरन पुरानी सरकार को उस पर कमेटी बनाई गई। कमेटी ने, जिसमें आदरणीय हमारे स्पीकर रही सुमित्रा महाजन जी, उसके चेयरमैन भी रही है, और उसमें अमेंडमेंट हुआ। एक पुराना जहरीला कानून जो था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो अमेंडमेंट हो गया। अभी नया बन गया, 2013 ला रहा है। ये पूरे देश के किसानों को लाभ मिला है। एक इशू चंद्रपुर लोकसभा से निकला, लेकिन देश के पूरे स्टेट को इसका लाभ हुआ। ऐसे कई बातें होती है। एक मैं उदाहरण दिया हूँ। तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी ताकत है और उसको अगर कोई श्रद्धा से काम करता है तो वो आप लोग हैं। आप लोगों ने काम किया, आपकी गरिमा को समझा है। मैं आपको लोकसभा के ये सही पार्लियामेंट मेंबर भी मानता हूँ। एक जब मैं लोकसभा में पहली बार गया था 96 में, तो काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जैसे समझा हम लोगों को, लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, कोई भी हाउस रहे, जब समझते है आदमी को तो लगता है कि मैं वहाँ का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बन के बैठना पड़ता है और लेक्चरर भी बन के मिलना पड़ता है। दो बातें हैं। ये हमारा जो रोल है, ये लेक्चरर का भी रोल है और स्टूडेंट का भी रोल है। दोनों बातें लेके हम लोगों ने काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो ये अवार्ड से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। ये अवार्ड आपको नहीं मिल रहा है, ये अवार्ड के काम को नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री जो अपने देश के संविधान में जो बना है, जो संविधान हमें देश के लाड़के पुत्र, लाडले पुत्र, रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दिया है, कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान एक गणतंत्र बना है, ये प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। उस संविधान की हम पूजा कर रहे हैं और उसको नतमस्तक होकर आप काम कर रहे हैं। देश के हर कोने का सब्जेक्ट जब यहाँ लोकसभा में आता है तो समझ लो कि यहाँ वाकई में जो हमें लोकतंत्र को संभाल के रखना है, तो हम उसको निश्चित ही आप पूजा कर रहे हैं। और इसी के चलते बरसों से जो हमारा प्रश्न प्रलंबित है, कई प्रश्न थे, वो चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर हो या पाकिस्तान की सीमा पे चलने वाला आतंकवाद हो या कश्मीर शरीफ का 370 का इशू हो या महिलाओं के लिए 3 तलाक का सब्जेक्ट हो, कितने बड़े बड़े इशू लोकतंत्र के माध्यम से सरकार ने यूनानिमसली हल कर दिए। यही जीत होती है लोकतंत्र की। बार बार मैंने सुना गृह मंत्री जी ने कहा कि अस्थायी रूप से 370 लगा था। ये बात सब सामने आई कभी तो प्रश्न में किसी लोकसभा के सांसद ने विषय रखा और लोकसभा में ये अस्थायी था, हटाने में बहुत कठिनाई नहीं थी। एक समय आया, हट गया, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से हटा है। यहाँ कोई जबरन नहीं हुआ है, ना राम मंदिर जबरन बना है, ना 370 जबरन बना है। 3 तलाक के लिए भी सरकार ने कई बार लोकसभा में बिल लाया है, कई बार अमेंडमेंट आता गया और सभी ने माना, तभी उसको सरकार ने लागू किया। ये लोकतंत्र के माध्यम से सबसे बड़ी बातें होती है। तो जो बिल आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, यूनानिमसली होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें आप लोग हिस्सा लेते हैं और इस तरीके से हिस्सा लेने वालों का यहाँ कितना आपने काम किया इसका रिकॉर्ड होता है। और उसी को लेकर ही यहाँ पर प्राइम पॉइंट सर की संस्था जो देश के लिए सेवा कर रही है लोकतंत्र की, उसको मैं बधाई देता हूँ। आपने सही दिशा चुनी है। 2010 से आप काम कर रहे हैं, तभी से मैं आपसे जुड़ा हूँ। और इस संस्था को सबसे बड़ी बात एक है कि ये देश के महिम रहे राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आशीर्वाद इस संस्था को था पहले। तो पहली बार जब हमें अवार्ड मिला तो उन्होंने हमें मोबाइल से स्पीच दिया था, हमें बधाई दी थी। और उसलिए मैं जानता हूँ कि ये संस्था को बहुत बड़े विभूतियों का आशीर्वाद है और आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये काम देश के लोकतंत्र को मजबूत जरूर करेगा, लेकिन अच्छे सांसद बनाएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।
Thank you so much for sharing your enriched experience and wishes for all, sir. Now, we have come to the much-awaited presentation ceremony. As we invite the award winners, we request them to come to the stage and receive the Sansad Ratna Awards from our esteemed chief guests. We have 3 categories, that is Sansad Ratna Award, Sansad Maharatna Award, and Sansad Utkrisht Maharatna Award. First, we are starting with the Sansad Ratna Awards. This is an annual award for outstanding performance in the Lok Sabha. 5 parliamentarians are honored with the Sansad Ratna Awards 2024. They are getting this award for their outstanding performance under initiated debates, private members' bills, and questions during the 17th Lok Sabha. We congratulate all the award winners. May I now invite Dr. Sukanta Majumdar ji, BJP West Bengal, to receive the Sansad Ratna Award. May I invite Shri Kuldeep Rai Sharma ji, Indian National Congress, Andaman and Nicobar Islands, to receive the Sansad Ratna Award 2024. May I invite Shri Sudhir Gupta ji, BJP Madhya Pradesh, to receive the Sansad Ratna Award 2024.